energy stored in a capacitor. Okay. If you want to know where this is, where I'm teaching from, you can go to theory. There are two PDFs I have uploaded. You go to the theory PDF, and in the theory PDF, you can go to, I think, page number 6 of the PDF. Energy is stored in a charge capacitor. That's what I'm teaching. Okay. So if you open it also, okay, parallelly, and see on page number 6, there is a diagram which is capacitor initially matlab there is no charge. Okay, there is no charge. Now what happens? Finally kya hota hai? Finally aisa hota hai, capacitor +3 -3, right? Understood everyone? This is initially, this is finally, right? Intermediately, suppose this Q was 10 coulomb, so this was +10 and -10. Intermediate as see directly 10 तो नहीं आया होगा ना, पहले 1 +1 +2, ठीक है? होता कैसे देखो, फिर से सुन लो. When you connect it to a battery to charge it, okay, charges move. Now in solids only electrons are free, protons are not free. In solid, ये plate भी solid है, ये wire भी solid है, battery में भी solid है. So only electrons are free to move. Okay, negative charges are free to move. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से उठते हैं, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उठते हैं, उठ के इसके थ्रू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं. ठीक है, दे सिट अप हियर. सो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली 0 था, अभी 10 फाइनली होना है, तो +10 कूलम होना है. तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बीच में कभी ऐसा हुआ होगा ना कि बीच में इंटरमीडिएट कभी ऐसा होगा ना, यहाँ +3 होगा, यहाँ -3 होगा, ऐसा होगा ना बीच में. सो एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एक चीज और सुनना. जब ये चार्ज मान लो ये ऐसा है, ये +3 से ये -3, ठीक है. अभी सोचो इस कंडीशन में, ठीक है, और इस कंडीशन में, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इन दिस कंडीशन के ऊपर वाली कंडीशन में, व्हेन इट इज 0 कूलम, जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएगा, तो यहाँ पे इनिशियली तो 0 चार्ज है, राइट? यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जा रहा होगा तो उसको, तो वो फ्रीली चला जाएगा ना, मतलब ठीक है. बट यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे +3 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से मूव अवे, इट वांट्स टू मूव अवे. बट क्या होगा, बिकॉज दिस इज प्लस चार्ज, दिस प्लेट इज प्लस चार्ज, इट विल अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन को उठ के इस प्लेट से इस प्लेट जाना है, तो this plate, the plate number 1 is attracting, plate number 2 is repelling. Do you understand? Electron wants to go from plate 1 to plate 2, right? Plate 1 to plate 2, whereas जब plate 1 positive और plate 2 negative है, this is a difficult process, right? This is a more difficult process than when it was 0 coulomb. Everyone understands this? Yes or no? Hello? Yes sir. Yeah. तो वर्क डन, जो वर्क डन होता है, वर्क done to move this electron from here to here, right, in this case, should not be the same as work done when it was from in this case, right? Because of course the work done is charge moved. Work done क्या होता है? work done होता है charge moved into delta V, into delta potential difference, right? जब पहला इलेक्ट्रॉन गया था तो डेल्टा V 0 था, तो उसको उसके लिए कोई वर्क नहीं करना था. You understand this, everyone? The first electron गया था अनचार्ज कैपेसिटर पे, जब पहला इलेक्ट्रॉन गया था, the first time charging हुई थी, थोड़ा सा चार्ज, तब there was no work done. But now there is more work done when it is +3 -3. The next moment it will become +4 -4. Now if you want to move an electron, there will be more work, right? Because there, the delta V is now there, right? The delta V is increasing. Fine everyone? तो लिखा, ये समझ में आ गया सब? Yeah. भावना? Yes sir. Okay. So we can't just say the work done is not equal to the total charge of the capacitor, the final charge into delta V. ऐसा नहीं है, because ये final charge में, if you know, in this individual, when they came from positive to negative terminal, for each the delta V was different. Okay, so you can't just
you know, for each the delta V was different. So what you have to do? You have to do it like dq. Okay, dq means small charges. We have to integrate. So therefore, dw is dq into v, which is v dq. Okay, v into dq. And what is v? V is a function of, at any point of time, if there is a charge q on the capacitor, small q on the capacitor, okay, and the capacitance is c, what is the delta v? Delta v is q by c, right? So this v is q by c dq. This is dw. dw is q by c dq. And the total work done, is equal to w is equal to integral dw is equal to integral q by c dq, where q grows from पहले charge कितना था? Initial. Q initial was 0 and q final was capital Q. Okay, q final was capital Q. So therefore, when you integrate this, if you integrate q dq, which is like integration of x dx, you get x square by 2. So you'll get q square by 2c. Okay, where the limits are 0 to q. And when you do this, you'll just get q square by 2c. Fine. Q square by 2c. This is the energy stored in the capacitor. Energy stored, इसको U बोलते हैं. Okay, U मतलब energy stored in the capacitor. Fine. So energy stored in the capacitor is equal to, sorry, if there is a capacitor of charge of capacitance C has a charge capital Q, it is Q square by 2C. ठीक है. Also we know there is a एक relation, तो पहले से ही पता है Q is equal to CV, ये पता है ना पहले से. तो उसको इसमें डाल दोगे अगर, ठीक है, और इसमें डालोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर. देखो आ रहा है ना, ठीक है. और Q, और अगर तुम C की जगह इस C की जगह Q बाई V डाल देते हो, Q बाई V, तो आ जाएगा हाफ QV, ये भी आ जाएगा. ठीक है, ये सेम अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्म ऑफ द सेम, मतलब 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम फॉर्मूला है. ये समझ में आ गया सबको? Everyone has understood this? Next is energy stored in the capacitor. Capacitor क्या होता है? दो प्लेट होती है. Capacitor are two plates, right? इनका बीच में एरिया इनका एरिया A होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया A होता है दोनों का, और डिस्टेंस इज D, राइट? ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज in this region. You should understand electric field is in this region, no? ठीक है. Tarun, in what volume is electric field confined to? In what volume is electric field confined to? Sir, from like it's between the two plates. So what volume does it occupy? The area, this volume, no, this volume between the plates. AD squared. AD, AD. AD. You understand this, everyone? Okay. The energy stored in the capacitor is in the form of electrostatic. ये electrostatic field ही तो है ना energy, right? This is what energy stored in the capacitor. ये कौन सा? In the form of what? Electrostatic energy. Electrostatic energy, ठीक है. So कितना है? इतना है. अब देखो, अगर it is this amount of energy stored, or this in this volume, we can also talk of something like energy density. Energy density. It is also called energy per unit volume. Okay, energy per unit volume, which is you can do. Let's I'll use half CV square. Okay, I can use anyone, but I'll use half CV square divided by what is the volume? It is AD. Okay, AD. And then I was using a
a thing with C because I wanted to use C is epsilon naught A by D. Okay, so half C was epsilon naught A divided by D. Yeah, and then there is an AD again, and then V square. Now, what is V? If you want to write V, you can also write V was electric field. V is ED, right? V was ED, electric field into distance, right? So you can write V as ED and then you can square it, right? It's square, right? So what you'll get is, see, here D square will go, right? A will go. You will get half epsilon E square. This is very, very, very important result. Okay. Why is this important? I'll tell you. What kind of electric field is inside the capacitor? What kind of electric field is inside the capacitor, Kshitij? So I didn't understand the question. What kind of uniform, not uniform, ऐसा उस तरह की Uniform. यूनिफॉर्म, ठीक है. तो अगर ऐसा है कि इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को बोलते हैं, उसको यूवी भी बोलते हैं, यूवी यूई बोलते हैं, इसका सिंबल है यूई, कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर. दिस इज नॉट जस्ट, this result is not just valid for capacitor, it is valid for any uniform electric field. Okay, कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसकी वहां पे एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ओके, फाइन. इतना सब एवरीवन हैज गॉट दिस. ओके, नाउ sometimes you will get a question like what is the heat generated by a battery. Okay, heat generated by a battery, तो ऐसे लिख लो, sorry, work done by battery, work done by battery. कैसे क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लो. is U final of the capacitor minus U initial of the capacitor. ये कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. सपोज क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा होगा, कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, बैटरी का पोटेंशियल V. What is the final Varun, what is the final charge on the capacitor? Keep your mic. Okay. Yeah. So it'll be CV. CV. Okay. What is the final energy of the capacitor? So it'll be around so we have to use that half CV squared formula, right? You can use, yeah, you can use half CV square also. You can use, you know, the charge on the capacitor is plus CV minus CV, right? So you can use Q square by 2C also. You get the same result. You can use half QV also. Okay. Okay. What is the initial energy of the capacitor? So will this be 0? Yes, it is 0 because there was no charge on the capacitor. You can say it is Q square by 2C and initially it was Q was 0. Okay. So what is the work done by the battery? You find me, which is half CV squared. Half CV squared. Fine. ठीक है, फाइन एवरीवन. एक इस पे और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा और घुमा देंगे, ऐसे क्वेश्चन तो कैसे आए. सपोज एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस इज सपोज 10 माइक्रोफैरेड. ठीक है, फाइन. और जो बैटरी कनेक्टेड है वो सपोज है 10
10 नहीं 1 वोल्ट, ठीक है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। लेकिन कैपेसिटर पे जो पहले से ही चार्ज है, पहले से चार्ज कितना है इस पे, कितना होगा प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम पहले से ही चार्ज है, ठीक है। अभी इसको ना, सो दिस वाज इनिशियली चार्ज, इनिशियल। अभी इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये 1 वोल्ट की बैटरी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, निकालो उसको। पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना, ठीक है। So what are we doing? I actually just joined. What are we doing? We are doing। कितने देर से तुमने ज्वाइन, मतलब अभी शुरू से अभी ज्वाइन किया तुमने? Yeah. So there was net problem. I texted you. I think. We are doing capacitor का energy, so I'll give a quick recap in 1 minute. Okay, देखो, I'll give you the formulas. Okay. Okay. If a capacitor is charged, if a capacitor's capacitance is C and it is connected to a battery of potential V, the charge in the capacitor is Q is equal to CV. ये you have done last class. Yeah. After that, the work done. Today we have discussed work done or energy stored in the capacitor. Work done or energy stored in the capacitor is these three formula: Q square by 2C, Yeah. Q square by 2C, and if you use Q is equal to CV and Q square equal to 2C, you'll get half CV square. Or you can also get half QV. I mean, these three are equal formulas, same formula. Okay. You can get any one of these three by just substituting Q is equal to CV, or C is Q by V, or V is Q by C. Okay. Okay. So energy stored in the capacitor is Q square by 2C, or half CV square, or half QV. You have to, आज के लेक्चर के लिए तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। Okay. Sir. याद कर लो, हाफ CV स्क्वायर याद कर लो बस, ठीक है। Okay. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी के ये जो इतना पार्ट है, ये तुम लेक्चर में देख लेना, ठीक है। Okay. याद जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद है वर्क डन बाय बैटरी। जब तुम एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क बैटरी को चार्ज करती है ना। Yeah. What is the work done by the battery? It is equal to final energy of the capacitor minus initial energy of the capacitor. Okay. Good. मैंने एक एग्जांपल करवाया कि एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, यहाँ पे इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया V, तो इस पे चार्ज आएगा CV, फाइनल चार्ज। Yeah. तो इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। Yeah. इसकी इनिशियल एनर्जी जीरो है बिकॉज चार्ज जीरो था। Uncharged. Yeah. व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? इट इज हाफ CV स्क्वायर। Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर जिसमें पहले से +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम है, Yeah. उसके कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। Okay. उसको मैंने 1 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, Yeah. ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। Okay. Fine. Good.
Anushri, what's the answer? I'm not sure. What is the initial energy of the capacitor? What is the initial energy of the capacitor? 3/2. No, not 3/2. Sorry. 10. Initial, what is the initial charge on the capacitor? Half CV square and then into फिर से बोल. half What is the CV. initial No, charge on the capacitor? half CV square. I'm asking what is the initial charge on the Oh, capacitor? sorry. 3 plus 3. Microcoulomb. Yeah. 3 microcoulomb. What is the capacitance of the capacitor? 10 micro. Okay. So what is the energy? You see, if I'm asking what, पहले मैंने क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट सुनो. मैंने बोला एक कैपेसिटर है जिसपे पहले से +3 माइक्रोकूलम है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है. अभी तक मैंने ये नहीं बोला उसको 1 वोल्ट से कनेक्ट किया है. इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Which formula will we use out of these three? No, Q is equal to CV. अरे dude, Q is equal to CV तो चार्ज निकला. मैं पूछ रहा हूँ what is the which formula you can directly use out of these three to find the energy? Only Anushri will answer. You have a charge in the capacitor. You know the capacitance of the Square capacitor. by 2C. Yes, Q square by 2C. तो initial energy कितनी है? Q square by 2C. So 3 we'll write Q square by 2C. So 3 microcoulomb का square divide by 2 into 10 microfarad. Okay. ठीक है. अगर ये सब SI यूनिट में होता, ये कूलम नीचे होता, ऊपर कूलम होता, नीचे फैरेड होता, तो आंसर जूल आता. लेकिन अभी कितना आएगा? अभी आएगा 3, बेसिकली 9/9 ऊपर आएगा, नीचे 20 आएगा. और माइक्रो कूलम का स्क्वायर बाय माइक्रो फैरेड, एक माइक्रो माइक्रो जाएगा तो माइक्रो जूल आंसर आएगा. ठीक है. 9/20. लेट्स कीप इट लाइक दिस. ओके, नो नीड टू डिवाइड एंड ऑल. UI is equal to 9/20 microjoule. Okay, wait a minute. Anushri, speak something. So did you say something? One second. Keep speaking something. Speak something. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So you understood what is U initial? Okay. What is the final charge on this capacitor? -3 micro. What will be the final charge? See, this capacitor has a capacitance of 10. It is connected to a voltage of 1 volt battery. So what is the final charge? Q is equal to CV. When you have a capacitor of capacitance C connected to a battery potential V, the final charge on the capacitor must be CV. Okay. So the capacitor will charge up like this. Which plate will be +10? Which plate will be -10?
Anushri, Plus will be on the left. plus what? Plus will be on the left. Plus how much on the left? 10. Yeah, plus 10 microcoulomb on the left, minus 10 microcoulomb on the right. Okay, this is the final charge. So what is the Q final? What is the final energy? Five. 5. Final energy is Q square by 2C. So 10 microcoulomb per square divided by 2 times 10 microfarad. You will get 10, 10, 100, 100 by 10, 5 microjoule. Okay. And what is the work done by the battery? Work done by the battery is final energy minus initial energy. So 5 minus 9 by 20 microjoule. That's the answer. Okay. So Yes, we can just use like half CV square for you can use half CV square C. to You can find- say that initial energy was the, see, if you want to use it to find the initial energy of the capacitor, right, and you're using half CV square, you will not use V as 1 volt, okay, Okay. because if you see the initial capacitor has a charge of plus 3 microcoulomb minus plus 3, basically 3 microcoulomb is Q, and the capacitance is 10 microfarad, right? So the V, you will get it from here. V is Q by C, which is 3 by 10 volt. Okay. Oh, okay, got it. Okay, ऐसे करते हैं. तो इनिशियली कैपेसिटर पे वोल्टेज 1 नहीं है. Everyone understood? इस समझ में आ गया? Everyone has understood this? ठीक है. अब सुनो, कैपेसिटर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और ट्रिकी होती जाएंगी. ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना. दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है. सी, एक है कैपेसिटर C1, ठीक है, और एक कैपेसिटर है C2, ठीक है. कैपेसिटर C1 पे इनिशियल चार्ज Q1 है, ठीक है, और उस पे therefore potential V1 है. You should understand that these three quantities are not independent of each other because they are related by your equation Q is equal to CV. Okay, तो if the capacitor पे initial charge Q1 है, C1 पे capacitor पे initial charge Q1 है, उसका potential V1 है. These three are not independent because of course Q1 is equal to C1 V1. ठीक है, fine. And capacitor C2 पे भी same है, कुछ Q2 है, उस पे charge V2 है. ठीक है, and again these three are not independent because they are connected by Q2 is equal to C2 V2. ठीक है. After this what you do is, अच्छा मान लो ये प्लस टर्मिनल, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है. what you do is you connect them. ठीक है, you connect them. ठीक, you connected them. After connection, what Adi, you tell me what does not change of a capacitor even if you connect or whatever you do it with it. I mean, you connect to it to something, what does not change? So the potential. अरे यार, नहीं, sorry, capacitance won't change. कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. Yeah. कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. तो आफ्टर, ये बिफोर कनेक्टिंग है, ये बिफोर कनेक्टिंग था. ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग क्या होना चाहिए? आफ्टर कनेक्टिंग क्या होना चाहिए?
आफ्टर कनेक्टिंग C1 C1 ही रहेगा और C2 C2 रहेगा, ये पता है ना सबको। दूसरी चीज क्या, अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, मतलब इफ यू कनेक्ट टू थिंग्स, Potential. पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल कुछ v रहेगा। आई डोंट नो व्हाट इज v, बट इट इज नॉट, इट इज सेम व्हाटएवर v इट इज, फाइन। and of course charge will change, so it is q1 with a dash and इसका charge is q2 with a dash, fine। ये आफ्टर कनेक्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि क्या चेंज होता है, क्या सेम होता है, ओके। और ये v सेम किस लिए, कि कनेक्ट किया है, ठीक है। कनेक्ट नहीं करते तो v also don't need, doesn't need to be same, okay। whenever you connect two things by a wire, ठीक है, they have their potential must become equal, okay, to each other। You got it till here? Fine everyone। अच्छा बाय द वे, अगर ये नए चार्जेस हैं तो दे मस्ट बी, यू नो, ये सब ये वैल्यू तो अभी भी सेटिस्फाई करेंगे ना। देखो इसको तो यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसका Q1 इज इक्वल टू C1 V1 सेटिस्फाई करता है, इसका Q2 इज इक्वल टू C2 V2 सेटिस्फाई करता है, इसका भी तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V सेटिस्फाई करेगा ना। इस कैपेसिटर के लिए Q1 डैश इज C1 V और इस कैपेसिटर के लिए Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V, राइट एवरीवन, ये यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट इज ये कैपेसिटर जो सिस्टम है, इस पूरा इस सोचो अबाउट दिस सिस्टम, दिस होल सिस्टम, ये होल सिस्टम में बाहर से तो कुछ चार्ज आ नहीं रहा है, राइट, नो चार्ज इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और जो भी चार्ज है इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, आपस में, बिटवीन देम, अमंग देम। neither any charge is coming from outside to the system or any charge is going from the system to outside, therefore the net charge of the system must remain constant, the net charge of the system must remain constant, so net charge of combined system, okay, of combined capacitor system must be constant, ठीक है। अब नेट चार्ज पहले कितना है, Q1 प्लस Q2, अभी कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ओके ओके। and this right side is C1V plus C2V, therefore you can write V is equal to Q1 plus Q2 by C1 plus C2, so this is the common potential is Q1 plus Q2 by C1 plus C2, okay. And So Q1, yeah, one second, okay, just a second, and Q1 itself was C1 V1, Q2 itself was C2 V2, so the net potential is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, yes. So the potential difference after connecting for both the capacitors will be equal. Potential difference, Matlab the volt. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल देखो दोनों का पोटेंशियल सेम अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, Okay. दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। Yeah, okay. व्हेन यू कनेक्ट Fine. टू थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोनों के लिए मैंने एक ही सिंबल यूज किया है, इसके लिए भी v यूज किया है, v यूज किया है, इसके लिए भी v यूज किया है, बिकॉज़ देयर पोटेंशियल अक्रॉस देम आर इक्वल, ओके। तो ये एवरीवन हैज अंडरस्टूड द v कॉमन पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल रीच होता है आफ्टर यू कनेक्ट देम, the common potential which is reached is C1 V1 plus C2 V2 by C2 by C1 plus C2, ठीक है, fine। It is like M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M2, okay।
Everyone has understood this now. There is some thoda sa derivation type that q1 dash was what? It was c1 into common potential v. You can plug this here, right? You can plug this common potential here, and you can find out the q1, the final charge in the system, like it will be c1 by c1 plus c2 divided by q1 plus q2. Okay, so c1 by c1 plus c2 into q1 plus q2, and the final charge in the second capacitor is c2 by c1 plus c2 into q1 plus q2. A better form of remembering this is, बेटर फॉर्म ये देखो, ये क्या है, ये पहले कैपेसिटर का जो चार्ज है फाइनली वो है उसका रेशियो बाय टोटल, राइट, इनटू द टोटल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज. दिस इज टोटल इनिशियल चार्ज. Okay, and this is ratio of the capacitor 1 to the total capacitance. Okay, this is ratio of the capacitor 2 into the total charge. Okay, this problem is very similar to like this. When you connect these two buckets, finally what happens, this is initial, the finally thing what happens, sorry, yahan banata hu. The water reaches a common potential, a common height. Okay, water reaches a common height, okay, so it is connected like this and it reaches a common height. The final waters in both the system is of course the ratio of their capacities into the total volume, initial volume of the water. Okay, where total initial volume is ये वाली जो चीज है ना, ये total initial volume ये है, ये वाला पानी plus ये वाला पानी, blue water plus green water. Okay, it is like this if you compare it to one. Okay. Then see, this is on all page number 9 of the PDF. Okay, of the page number 9 of the theory PDF. There is a homework for you that you have to find heat loss during redistribution. What is a heat loss? Any heat? What is the heat loss when you do this? Okay, when you do go from here to here, there is a heat loss because charges are moving, right? When charges move through a wire, right, there will be heat loss, I square R. Okay, this heat loss is simply what is the initial final energy of the system minus initial energy of the system. Very simple. Okay, you have to understand that there is a big formula of this. It is half C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 square. ये तुमको अपने आप करना है, ये लाना है, ठीक है. और UF क्या लिखोगे? UF you will write initial final energy of both the capacitors, right, which is Q1 square by 2 C1 plus Q2 square by 2 C. ऐसे और initial भी अपने आप करना है. You have to do this, okay, on your own. How do we get this result? Okay, it's pretty easy. Just do it and send it to me. Okay, this is homework you have to send. Okay. Okay. Then there is, we will do an example of this. Okay, see the example 5 in the book. The example 5 is, there is a capacitor, terminal A, terminal B. It is 2 microfarad and it is 20 volt. This is plus minus 3. It is charged to a potential of 20 volt. And this is C. There is another capacitor, capacitor 2, which is of 3 microfarad and is charged to a potential of 10 volt plus minus. Okay. So, Satvik, Yeah. what is the charge on the first capacitor?
Sir, 40 microcoulombs. 40 microcoulombs. Yes, it is CV. ठीक है. What is the charge in the second capacitor? Initial charging कितना है? 30. 30 microcoulomb. Very good. अब इन दोनों को अगर कनेक्ट कर देते हैं, कैसे बोला उसने? कनेक्टेड, A is connected with C, मतलब ये C से और B D है, B D से कनेक्टेड है, B is connected with D. क्या होगा? ऐसे they will look like this. ये आपका 2 माइक्रोफैरेड था, ये 3 माइक्रो, ये तो वो इतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाला. ठीक. पोटेंशियल कुछ कॉमन पोटेंशियल रीच हो जाएगा, सम V. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दैट V. और क्या लिखेंगे? द इनिशियल चार्ज इन द सिस्टम. इनिशियल चार्ज कितना है? Q1 plus Q2, राइट, इज 40 plus 30 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इन द सिस्टम व्हिच इज हाउ मच? इस पे चार्ज कितना है? सात्विक, हाँ. कितना चार्ज है इस पे? चार्ज इज CV. C is 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज इज V, तो कितना चार्ज है? 2 into V. Yeah, like we don't know V yet, so 2. हाँ, we don't know V, बस 2V plus 3V. 2V plus 3V. Yeah. तो 2V plus 3 5V 70 is equal to 5V. V कितना आ गया? 70/5 कितना होगा? 14 होता है क्या? हाँ, 14 वोल्ट. 14 वोल्ट. ओके, फाइन. तो इस पे कितना है? 14 वोल्ट है. इस पे कितना है? इस पे भी 14 वोल्ट है. ओके, अक्रॉस. अगर ये 14 वोल्ट है, अगर ये 14 वोल्ट है, तो फर्स्ट पे चार्ज कितना है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट? Q1 डैश कितना है? So 28. 28 माइक्रोकूलम. ठीक है. व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर? 52. 14 minus the 14 to the 40. 40. 42 microcoulomb, right? Yeah. Everyone has understood this? पक्का सबको? किसी को डाउट है इसमें? फाइनली मिल गया. अरे वाह, मिल गया इसमें कि इस पे प्लस 20, इस पे 28 माइक्रोकूलम्ब है, इस पे 42 माइक्रोकूलम्ब है. ठीक है. अच्छा बताना, इनिशियली एनर्जी कितनी थी? व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी निकालते हैं. ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग. UI इज इक्वल टू, पहले पे कितनी एनर्जी है सात्विक? तुम्हें तीनों चीज पता है ना? तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. बोलो बोलो. So 296, 196. अरे मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए. फाइनल आंसर क्यों बोल रहा हूँ? नहीं चाहिए मुझे. Sir, half QV, so half into 28. इनिशियल पूछ रहा हूँ. इनिशियल मतलब कनेक्ट करने से पहले, इसके ऊपर की बात. So half into 40 into 40 into 20 ना. ये कुछ तो म्यू जूल आएगा, जो भी आएगा. ठीक है, मेरे को कैलकुलेट भी नहीं करना है. अच्छा, ये सिर्फ एक ही है, दूसरी की भी एनर्जी ऐड होगी ना? कितनी है दूसरी की? इसकी बेटा दो कैपेसिटर ना सिस्टम की. Yes, sir, half into 30 into 10. हाफ टू 13 to 10 माइक्रोजूल. ठीक है, ओके. ये होगी इनिशियल एनर्जी. व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? Yes, sir, half into 28 into 14. एक मिनट, तुमने क्या बोला? हाफ इंटू 28 इंटू 14. 14. तुम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो अभी? Half CV then, half QV then. हाफ QV. तो Q नहीं है 28? नहीं, Q है 28. यस, करेक्ट. 28 माइक्रोकूलम. हाँ, सही है. इंटू V 14 वोल्ट. हाँ, और प्लस Half 42 into 14. 42 इंटू 14. हाँ 14 माइक्रोकूलम. ठीक है.
तो व्हाट इज द हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस होता है वो होता है हीट लॉस, मैंने शायद गलत बता दिया, हीट लॉस इज नॉट फाइनल माइनस, इट इज इनिशियल माइनस फाइनल। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो शायद नेगेटिव आएगा, करके देख लेते हैं हीट लॉस। अच्छा इनिशियल कितना है, यू आई इज हाफ एन, इधर से 400 आएगी और इधर से 150 आएगी, 400 और 150 होगी 550 माइक्रो जूल। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ न्यूमेरिकली तो बता देना, ठीक है, मैं यूजुअली न्यूमेरिकल्स रहा हूँ। यू फाइनल ये हो गया 7, ये हो गया 7, 7 टाइम्स 48 प्लस 22, 4 2 6 70, 70 इंटू 7 490 माइक्रोजूल। ठीक है, अपने आप कर लेना, देखो यही सही आ रहा है कि नहीं। यू फाइनल थोड़ी सी कम होती है क्योंकि लॉस हो जाती है, लॉस हो जाती है, कहाँ लॉस हो जाती है ये, इट गेट लॉस्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस। व्हेन चार्जेस ट्रैवल दे नीड एनर्जी टू मूव। चार्ज उठ के गया ना इधर से इधर, उठ के गया ना, ये पहले इस पे 40 माइक्रोकूलम था, अभी इस पे 28 है, मतलब क्या हुआ है 12 माइक्रोकूलम Q1 फर्स्ट कैपेसिटर से दूसरे पे चला गया है। समझ में आ रहा है ना, 12 माइक्रोकूलम हैज ट्रैवल्ड, everyone do you understand that 12 microcoulomb has traveled from the first capacitor to the second capacitor। इसलिए क्या हुआ है, Q1 का चार्ज हो गया 40 से 12 कम करो तो 28 हो गया, राइट, और Q2 का जो चार्ज है वो 30 से 12 ऐड करो तो 42 हो गया। ओके, सो 12 ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मच ऑफ चार्ज हैज मूव्ड, so the how much of charge has moved, it is 12 microcoulomb। okay, it has moved from capacitor 1 to capacitor 2। ठीक है, so therefore ये एनर्जी कहाँ गई, what is the heat loss, heat loss is 550 minus 490, u initial minus u final, so it is 60 microjoule। okay, if you want to see this whole question once again, यहाँ से start होके ऐसे, ठीक है। Sir, so the whole system is more stable when it's connected than when it's not connected, right? Oh, the whole system is more stable than when it is connected, than it is not stable. Stable. Oh, you, because you're saying that always, I have said that stable systems have lesser Energy, yeah. energy. Yes, that's very correct. Okay. Is a connection of these two baltis more stable than the नीचे वाला two baltis, its connection is more stable, no? Yes, correct. Okay. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक होमवर्क अपने आप पढ़ना, उसमें उसने एक चेंज किया है कि ये व्हाट इफ, व्हाट वी डिड वाज वी कनेक्टेड A with C and B with D, ओके, लाइक दिस। व्हाट इफ यू कनेक्ट उल्टा, व्हाट विल हैपन, ओके, उसने नीचे डिस्कस किया है उसको, व्हाट विल हैपन, you read it on your own, okay, and ask me if, in the next class if you have any doubts in that, okay, it's easy, fine, you know from where to read, right? ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, बिना डेरिवेशन के थोड़ा सा बता रहा हूँ, बिना डेरिवेशन के ये बता रहा हूँ कि कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे लिखो, if two capacitors are connected in series, should I tell you the derivation? Yes, I will tell you the derivation, C1 C2, okay,
C1 C2, तो C1 C2 और ये C है, ठीक है. So what is C equivalent when it is in series? The C equivalent in series is सबसे पहले ना, पहले सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक when you connect two resistances in series, okay, R1 and R2, ठीक है, what is the effective resistance? R1 plus R2. Okay, correct, that's correct, right? Everyone agrees with this. What is the meaning of this? क्या मतलब इसका, what is the interpretation of this? कि the effective resistance of two R1 and R2 is R1 plus R2. What is the meaning of this? If both the resistors were replaced by a single resistor, then that would be its resistance. That would be its resistance. I mean, okay, that means very good. So that means the circuit. See, if you have an R1 and R2, the resistance offered by this system is same as a resistance offered by a resistance in individual resistance of resistance R1 plus R2, right? Right? यही मतलब है ना इसका. What is, और थोड़ा सा इसमें और we'll dig deep. What is the meaning of resistance offered by this? That if you connect a battery to this R1 plus R2, the current will be V by R1 plus R2, right? V by R1 plus R2, यही तो करते हैं ना. और अगर तुम एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, राइट, तो उसका कनेक्शन होगा V by R, राइट? ठीक है, देखो ध्यान से. इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी भी इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि उसका डेरिवेशन, जो रेजिस्टेंस वाला जो डेरिवेशन होता है वैसे करते हैं. रेजिस्टेंस सपोज एक ये एक R1 है और ये एक R2 है, ठीक है, और ये बैटरी पोटेंशियल है, ठीक है, और दूसरे केस में एक R है, एक बस एक R है which is equivalent. अभी तक मैंने नहीं बोला R equivalent is R1 plus R2, ठीक है, सेम बैटरी है. देखो अब ये बताना कि इसमें जो V है, इसमें जो I है वो कितना होगा. हम कैसे बोलेंगे इसमें I, डेरिवेशन ध्यान से देना. I है क्या, I is, दोनों में I सेम है, दोनों में, because they are in series, same current will pass, right? So we will say that the potential, we'll use KVL. There's something called KVL, Kirchhoff voltage law, which says the potential drop across the battery must be equal to the potential drop across the resistances. Okay, so we will say I is equal to V by R1 plus R2. ठीक है, समझ में आया? इस केस में क्या होगा, what is I? I is V by R equivalent. ठीक है, ओके एवरीवन. अब सुनो हम क्या बोलते हैं, अब ये लॉजिक सुनना ध्यान से. लॉजिक ये है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, ये सर्किट एलिमेंट जो इतना है, इसको उठा के मैंने इससे रिप्लेस कर दिया ना. I have, so I'll use a different color. I have replaced the green part. One second, okay. I'll be back in a minute, okay? Hello? Hello, can you hear me? Oh yeah. Yeah. So ध्यान से, ये important चीज है. Okay, sorry. That we have replaced the green part of the circuit with the blue part of the circuit, right? The rest of the circuit in both cases is this part, right? The rest of the circuit in both the cases is this part, right? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि रेस्ट ऑफ द सर्किट को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने कुछ और कनेक्ट कर दिया है. इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि रेस्ट ऑफ द सर्किट में जो भी हो रहा है
वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द थिंग विच यू हैव कनेक्टेड। रेस्ट ऑफ सर्किट में क्या है, आई है ना, आई, राइट। तो ये दोनों आई क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया? पहले केस में जो आई फ्लो हो रहा है सर्किट नंबर 1 से, सर्किट नंबर 1 से, वो सेकंड नंबर के सर्किट में सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी इंटरप्रेट एज कि जो पहले केस में जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है उसको सेकंड केस ऑफ रेस्ट ऑफ द सर्किट से डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, उन दोनों को लग ही नहीं रहा है कि तुमने कुछ चेंज कर दिया। दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट मींस। Okay, and when you say this and then you equate these two i's, okay, initially these i's were, you know, different i's were like I and I dash, and then you say because the rest of the circuit does not know what is happening in this part of the circuit, right? I mean it didn't make a difference, I must be equal to I dash, and therefore v by r1 plus r2 must be equal to v by r equivalent, and yahan se काटोगे and you'll get r equivalent is r1 plus r2. Understood? समझ में आया कि डेरिवेशन कैसे करते हैं, मतलब ये तो पता ही है ना, r equivalent is r1 plus r2, बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी तुम किसी चीज की इक्विवेलेंट को कनेक्ट करते हो तो रेस्ट ऑफ सर्किट को पता ही नहीं चलता कि वहां पे क्या हुआ है। समझ में आया? अंडरस्टूड? फाइन एवरीवन? ठीक। तो और सिमिलरली अगर तुमको पैरेलल में कनेक्ट करना है चीजें, जैसे तो एक R1 है और ये R2 है, राइट, और ये पैरेलल में जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, ये V है, ठीक है, और इसकी जगह तुम एक R इक्विवेलेंट लगाओगे, राइट, जिसमें अगेन सेम V है। तो फिर से जो ये वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट जो पार्ट है, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ तुमने डिफरेंट लगाया है, पता नहीं चलना चाहिए इसका। इसके लिए क्या है, वो द सेम करंट शुड फ्लो, सेम करंट शुड फ्लो इन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, द सेम करंट। इसमें करंट कितना है, सी इफ यू सी द करंट इन दिस इज, इसमें जो आई करंट अगर फ्लो करवाओगे एंड आई डिवाइड्स दैट I1 एंड I2, ठीक है, इन दिस, सो आई पहला आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों में डिवाइड हो गया, राइट। दूसरा आएगा, दूसरा इक्वेशन ये आएगी कि द पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट वन, यू नो, I1 R1 is equal to I2 R2 and this must be equal to V because you know the terminals are same। और इसमें क्या आएगा, I is equal to V by R equivalent। एक मिनट, ओके सी, सो वी विल डू I1, सी यहां से यूज करेंगे, I1 is V by R1, इसमें यूज करेंगे V by R1 प्लस I2 is V by R2, V by R2, this must be equal to I, और I क्या है, it is V by, यहाँ से यूज करेंगे I, this I from here and these I is from here, okay, this I1 is यहाँ से, I2 यहाँ से, and 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by R equivalent, ये आ जाता है, ठीक है, because this again same, this same current is flowing, इसमें I, इसमें भी I, okay, when you say same current is flowing through the battery, इसका मतलब है बैटरी को पता ही नहीं चला कि तुमने R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह R equivalent लगा दिया। फाइन, डेरिवेशन का लॉजिक समझ में आ गया? सेम लॉजिक यही यूज करेंगे व्हेन यू यूज टू कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे लिखो कैपेसिटर्स इन सीरीज, C1 C2 कैपेसिटर इन सीरीज, एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और अगर एक C इक्विवेलेंट बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही तुम किसी अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो, क्या करता है, व्हाट डज इट डू, क्या होता है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस इफ यू कनेक्ट एन अनचार्ज कैपेसिटर टू अ बैटरी? तरुण? Yes, sir. What happens if you, when you connect uncharged capacitor to a battery? Uncharged capacitor. So the charge moves. Yeah, and what happens, the capacitor finally charges, Yeah. it gets charged up, so charged. both of these systems should get charged up. The charge moves through the battery, right? The charge moves through the battery. So if this is equivalent capacitor, which is
like you can replace these two capacitors by this one single, what should be same? The Q moved should be same, right? Because Q moved is ये through the battery है ना, बैटरी को पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ तुमने कुछ और लगाया था, तो Q moved should be same. Fine everyone. Okay. ठीक है, तो let us say कि इस पे the final charge is Q dash. इन दोनों कैपेसिटर्स पे Q1 और Q2 है फाइनल चार्ज. अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये दो कैपेसिटर सिस्टम्स को देखना. एक कैपेसिटर C1, एक कैपेसिटर C2. तुमने फिर क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्टेड दिस टू द बैटरी. सॉरी, if you connected to this to the battery, then see this part of the circuit. ये कैपेसिटर प्लेट इतना पार्ट देखना बस, ठीक है, इतना पार्ट, ये जो चीज है, मतलब कैपेसिटर 1 की राइट प्लेट और कैपेसिटर 2 की लेफ्ट प्लेट प्लस मिला के इतना. क्या ये किसी बैटरी, क्या इज दिस कनेक्टेड टू द बैटरी? इज दिस कनेक्टेड टू द बैटरी? नो. Before you connected the battery, what was the net charge on this blue region? Before you connected it to the battery, both the capacitors are initially uncharged. What is the net charge on this blue system? 0. ये, और जब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी इस पर नेट चार्ज 0 ही होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये टच नहीं है ना किसी से, नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना, ठीक है. तो इस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए. नेट चार्ज शुड बी 0 ऑन दिस ऑलवेज. नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम शुड बी 0 ऑलवेज, ठीक है. और इफ इट इज 0 ऑलवेज, बट ये भी है कि बोथ द कैपेसिटर्स आर चार्जिंग, राइट? Therefore, whatever charge one plate, the other plate of this should have a negative charge of that. Whatever charge, इस पे जो चार्ज है, मान लो इस पे, तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे इस पे माइनस क्यू है, तो इस पे भी प्लस क्यू है. ओके, अगर इस पे माइनस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू है. ऑफ कोर्स मैंने ऐसा इसलिए अज्यूम किया है कि ये पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है. ये सब पहले चीज समझ में आ गई. व्हाटएवर प्लस क्यू तुमको एक्स मान लो तो एक्स मान लो, प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है. डायरेक्शन तुमको समझा देता हूँ क्यों है. डायरेक्शन इसलिए, अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पे माइनस एक्स आता है तो उसके दूसरे प्लेट पे प्लस एक्स होगा ही होगा. अंडरस्टूड? कैपेसिटर के एक प्लेट पे अगर माइनस एक्स, दूसरे पे प्लस एक्स होगा ही होगा, पक्का. ओके, समझ में आ गया एवरीवन? तो इस कैपेसिटर 2 देखो, राइट साइड के कैपेसिटर, इस कैपेसिटर 2 के लेफ्ट प्लेट पे माइनस एक्स है, तो कैपेसिटर 2 के राइट प्लेट पे कितना होगा? प्लस एक्स होगा ही होगा, ठीक है. वो कैपेसिटर का रूल है कि द प्लेट शुड बी ऑपोजिटली चार्ज्ड. और कैपेसिटर 1 के राइट साइड पे प्लस एक्स है, मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली, रुको, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, देयरफॉर ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है. मैंने उल्टा करना इसलिए गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो ऑफ कोर्स कैपेसिटर 1 के लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव ही होना चाहिए और कैपेसिटर 2 के राइट प्लेट पे नेगेटिव ही होना चाहिए. फाइन. तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल, ठीक है. When capacitors are connected in series, the charge on each capacitor is equal because of the simple reason, by this simple reason कि जो चीज unconnected है उस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए still. Okay, so they should be oppositely charged. Fine, ठीक है. अगर तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक, ऐसे V से, and you connected them, सब पे आएगा ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस, इवन इफ दे आर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, डजंट मैटर. ओके, even if they are of different capacities, it doesn't matter, the charge will be same. Okay, plus q, इस पे भी q, इस पे भी q, इस पे भी q. Fine everyone, ठीक है. So, Yes, so what kind of material is the capacitance made up of? Because can't we induce charge on the capacitance? Like induction, like you don't bring the bodies in contact, but then the
thing already अच्छा, has अच्छा। charge flowing through it अच्छा, because it's good, connected to the battery. गुड क्वेश्चन तुमने बोला सर इंडक्शन से तो मैं बिना टच के भी चार्ज इंड्यूस कर सकता हूँ, यही बोला ना तुमने? Yeah, हाँ, yeah. बट नेट चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते। चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, इसमें नेट चार्ज 0 है, ठीक है, तुम एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉल लेके आए इस पे, ठीक है, अगर तुम इस बॉल ए को बॉल बी से टच कर दोगे तो बॉल बी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर टच नहीं करोगे, सिर्फ पास लाओगे, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। Yeah. नेट चार्ज बी पे 0 ही होगा जब तक टच नहीं करते। बिना Okay. टच किए नेट चार्ज इंड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है। So in this case, the capacitance can gain charge, but the net charge will be 0. हाँ, यस, दोनों के पैसे चार्ज हो रहे हैं, होने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों अनचार्ज हैं, बैटरी चार्ज तो करेगी, तो दोनों कैपेसिटर को चार्ज होना भी जरूरी है, लेकिन जो नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम है वो 0 होना चाहिए, और ये जो जितना ये सिस्टम था, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, एंड बोथ कैन हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो देयरफॉर अच्छा ये बताना कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस? द पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज v is q by c, so x by c1, राइट? सही है ना? यार पोटेंशियल अक्रॉस दिस समझ में आया कि नहीं? What is the potential across this capacitance? V2 is x by C2. So what is the net potential? The net potential across this whole system is V1 plus V2 is x by C1 plus x by C2. So this much potential is there. ठीक है? तो बैटरी V है, ये बैटरी V है, इसके अक्रॉस अगर Q डैश मूव हुआ है, इसके अक्रॉस अगर Q डैश मूव हुआ है, ये देखो ये Q डैश भी x होगा ना, because x charge has moved. So if you see the combination x by c equivalent, okay, this is the amount of potential, right? Because again same charge has moved. Why same charge has moved? Because we have said the logic is the circuit should not know that you connected an equivalent circuit, okay? And v1 plus v2 is v, right? So you know you can equate these v and this v, you'll get x by c1 plus x by c2 is equal to x by c equivalent, which implies that 1 by c equivalent is equal to 1 by c1 plus 1 by c2, ठीक है। ये देखो, ये जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो देयर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लाइक द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, उल्टा है, ठीक है। Is this much fine?
Till here everything is fine. Okay, the next thing is easy. When capacitors are in parallel, we yeah. So see, this capacitor takes up, after connecting this capacitor takes up Q1, this capacitor takes up Q2. Okay, the net charge in the capacitor, the total charge which they take is the Q total which they take up is Q1 plus Q2, and in the equivalent circuit this Q total is what is gone, right? So you know the net charge Q total is, you'll write Q total from here from as C equivalent into V, and then Q1 is C1 V1, Q2 is C2 V2, and Q total you will write it from here, which is C equivalent into V. Sorry, it is V only, it's not V1 and V2. So C equivalent is C1 plus C2. Okay, so this is what in capacitors in parallel are simply C capacitor, equivalent capacitance is C1 plus C2. Fine, everyone? Capacitor circuits are very tricky, very tricky. So you have to practice a lot, and that's why I have sent you the PDF. Okay, I don't usually send questions and theory PDF, questions PDF from different sources to here. Okay, so isliye practice them a lot. What we will do is we will now do some questions, some easy questions from capacitor circuits, and then some difficult questions. I think एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज पीडीएफ है ना, एक्सरसाइज पीडीएफ, इसमें एक्सरसाइज 1 है, ठीक है? एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 3 नहीं 3 just 3 this 3 क्वेश्चन नंबर 3. ओके, 3 हैज मेनी सब पार्ट्स आई थिंक. यस, तुमको करने हैं, ठीक है? होमवर्क है, नॉट राइट नाउ, होमवर्क है. ओके, होमवर्क है. There is no easy circuit to start with. 1 second. No. What is the effective capacitance in series? What is the effective capacitance in series? 1 by C1 is equal to 1 by, no, the C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Yeah, 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ठीक है?
क्वेश्चन लिखो, अगर एक दो कैपेसिटर है, एक का है 2 फैराड, एक का 3 फैराड, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? They are connected in series, sorry, they are connected in series. What is the answer if what is the answer when, what is the effective capacitance? So 5 by 6. 6 by 5. 6 by 5 या 5 by 6? बार-बार सब बता दो। 5 by 6 by 5. 6 by 5. 6 by 5 है, 5 by 6 नहीं है ना? ठीक है, 6 by, हाँ 6 by 5 है, ओके। यू हैव टू लास्ट में भी इन्वर्स करना है, क्योंकि इट इज 1 by c effective is equal to 1 by c 1 plus, ये पक्का याद रखना कि लास्ट में इन्वर्स करना होता है। जो 5 by 6 बोला है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हो इसलिए, बच्चे बाद में भी 2 महीने बाद भी ऐसे करके भी 5 by 6 बोलते हैं, क्योंकि दे फॉरगेट टू इन्वर्स इट, ओके। किसी को डाउट है कि 5 by 6 क्यों नहीं है? सबको समझ आया 6 by 5 है, और 2 and 3 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा आंसर? 5. 5. हाँ ठीक है, ओके। चलो अभी मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे C1 है, C2, C3, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। ये वाला देखना, हाँ, यू कैन सी द स्क्रीन। Yeah. Yes, sir. इसमें ना ये वाला C1 है, फिर ये C2 है, मेरा स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है ना, और C3 है। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके। इनकी वैल्यू दे रखी है, C1 5 है, C2 7 है और C3 1 है, ठीक है। तो C2 C3 सबसे पहले पैरेलल में है, ठीक है। C2 C3 पैरेलल में है, तो C2 और C3 कितना है? C2 7 है और C3 1 है, तो कितना हो जाएगा इनका इफेक्टिव? 10. 7 और 1, Oh, sorry, 8. 8 हो जाएगा, ठीक। फिर ये जो 8 है, ये C1 के साथ सीरीज में है, समझ में? मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर एक बना दोगे 8, इन दोनों को हटा के इसकी जगह एक 8 बनाओगे ना, समझ में आया? ऐसे देखो, इन दोनों को हटा दोगे, यहाँ पे एक 8 बना दोगे, राइट? ये हटा, ये गया 8, तो ये 8 और ये 5 दे आर इन सीरीज, राइट? गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes, sir. सो व्हाट इज द 8 and 5 का पैरेलल? निकालो कितना है? 40 by 30. 40 by 40 by 13. 13. 40 by 13, हाँ, तो 3.08, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कैपेसिटर सीरीज में 4 3 और 2, 4 3 और 2, 4 3 और 2 सीरीज में, इफेक्टिव कितना है? 4 3 and 2। जिसने भी पिछले में 8 और 5 का क्या बोला था? 8 और 3 का बोला था, 8 और 5 का, 8 और 5 का, हाँ 8 और 5 का तुमने प्रोडक्ट बाय सम कर दिया था ना डायरेक्टली। Sir, 12 by 13. Yeah, Yeah. sir. 12 by 13. हाँ सुनो, प्रोडक्ट बाय सम जो आदत है ना करने की, तो 8 और 5 को जैसे प्रोडक्ट कर दिया 40 by 13, यही इसीलिए बोला ना 40 by 13। 3 के केस में ऐसा मत करना, 3 केस में ऐसा मत करना कि 4 into 3 into 2 by 4 plus 3 plus 2, वो गलत होता है। मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट करोगे तो 4 3 are 12, 12 2 are 24, divide by 9, 24 by 9 will not be same as 12 by 13, ओके? समझ में आया? आंसर इज 12 by 13, इट इज 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 2 is equal to 1 by c and 12 by 13, फाइन, ठीक है, ओके। चलो ये वाला करो, ओपन ABCD, पहले सर्किट देख लो, ये सर्किट बना लो। Everyone has made this circuit? The question is this: A is 3, B is 6, C is 4, D is 1. A is 3, B is 6, 3 6 4 1 ABCD.
You have to find the net capacitance across what? 3641 ABCD. Sir, is it 7? Yeah, sir. Same. शायद लग रहा है सही है. Sorry. Hmm. सेवन सबको आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूम चैट में पढ़ो, इजी है. What is the answer? So 3 farad. Your audio is drunk. Speak again. किसने बोला था? जो फिर से बोलो. So is it 432? फोर्थ Oh no, sorry. उठा के देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देना है. नहीं, There is a 3. 3 फैरेड है ना? 3 फैरेड. ठीक है. कैपेसिटी इज Q by V, मैक्सिमम चार्ज by V. Oh yeah, I did QV by mistake. इसका आंसर क्या है बताएं वैसे तो. वो कैपिटल डी मतलब स्मॉल डी है, जो हम स्मॉल डी रेफर करते हैं. हाँ, it will what? Will decrease. Decrease by 2. The same. The capacity magnitude charge, it's not connected लिखा है. Yeah. So won't it stay the same? Still stay the same. Yeah. इतना पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चे इंक्रीज डिक्रीज बोल रहे हैं. Again, I'll repeat, when you disconnect the capacitor from the battery, you have disconnected the wires. कैपेसिटर प्लेट वजह से 2 पड़े हैं, उनके वायर से खाली पड़े हैं.
चार्ज ऐसे कूद के तो नहीं जाएंगे ना हवा से, तो चार्ज कांट मूव, द चार्ज हैज नोवेयर टू गो। So this is connected, right? Sir, it is connected to battery. Right? मैंने नॉट कनेक्टेड वाला कॉपी पेस्ट किया है कि कनेक्टेड वाला कॉपी पेस्ट किया है? Connected वाला. It is connected. ओह सॉरी सॉरी माय बैड, एक कनेक्टेड वाला है, इसमें पोटेंशियल सेम होता है, इसमें चार्ज सेम नहीं होता। इसमें if it is not, it is connected to the battery, then the battery potential is constant. Okay, so charge will change. Yes, so I think the answer is decreases. Okay, okay, and if it is not connected, the charge will stay the same. Okay, okay. I think this is a nice question. You can do it. ये वाला दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? करो करो, you have to do it to convert to SI units. Okay, what is the capacitance of the capacitor you found out, Bhavna? Hello, Yes, sir. what is the capacitance of the capacitor? Will be E into D. E into D is the voltage across the capacitor. Yes, I haven't found it once. What is the formula for capacitance? Q by V. That is with respect to charge and voltage. What is the, in this question, what is given? Area and small d. Yeah. Sir, are there 3 options or 4? What, तुमको ऑप्शन मत देखो, तुम मुझे आंसर बताओ. This is C. Okay, epsilon naught A by D. Epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85. 1 second. Value of epsilon naught. Here's information from Byju's. 8.85 into 10 power minus 12. The value of epsilon naught is 1 second. Can we just take 9 into 10 to the power? 1 second. 8.85 into 10 power minus 12.
You can't, the k value is 9 to the 10 power 9, which is 1 by 4 pi epsilon naught is 9 pi. 1 by 4 pi epsilon naught. This value is 9 into 10 power 9. Okay. In this question we are not, we हमको तो नहीं पता k नहीं है, इस फॉर्मूले में epsilon naught a by d होता है, epsilon naught की वैल्यू पता होनी चाहिए. 8.85 into 10 power minus 12. Sir, I'm getting 22.12 into 10 power 8. I don't know if it's correct though. फिर से बोलो. 22.12 into 10 power 8. 22 पॉइंट जो भी तुमने बोला है इंटू 10 पावर 8, ये साइंटिफिक नोटेशन में गलत है क्योंकि 22 है पहला, तुम्हारा 22 नहीं होना चाहिए. पहला नंबर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए. समझ में आया? Yeah, I'll गलत try it again. मतलब, अरे आंसर गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुमने, तुम्हारे बोलने का तरीका गलत है. 22 पॉइंट समथिंग. Oh, like that. Yeah, then it should be 2.21 into 10 power 9. हाँ ठीक है, चलो ये तुम्हारा आंसर है. और Sir, I got a different answer. हाँ ठीक है, क्या है? I got 1.38 into 10 to the power 9. 1.3 पर 9. ठीक है, और ऐसे ही मतलब 10 पावर 9 तो चलो है, तो नंबर सही निकाल लो ना. कौन, पता नहीं, दोनों में से एक का तो गलत है. Sir, मेरा गलत है. I think I got to know what I did wrong. ओके, देखो कितना आ रहा है. Sir, मेरा सिर्फ पावर का मिस्टेक है. ये 2.21 है इसका करेक्ट आंसर. Yeah, I got 8, but it's. Oh, wait. Okay. नहीं, तुम्हारा सही था, पहले ही सही था. Yeah. सबसे पहले क्या करना है, सी निकालना है. सी निकल आएगा. सी कितना निकला है बताओ. ए का वैल्यू डालना है तुमको. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मत डालना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना. तो आई थिंक A is 8.85 into 10 to the power. ए पूछना. ए minus. एरिया. Oh, area is 10 power minus 4 into 10 power minus 2. Yeah. 100. No, 10 power 2. So it's 10 power minus 2. That's the total area. ये एरिया 10 पावर माइनस 2, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय -4. If you do 100 into 10 power minus 4, area will be 10 power minus 2. What is the separation of plate? Small d कितना लिखना है? Small d कितना है? 10 to the power -4. Yes, 10 to the power minus 0.1 millimeter is 10 to the power minus 4 meter. ठीक है, इतना सब डालोगे इसमें तो see what is the capacitance of the capacitor. कितना आ रहा है? 8.85 into 10 to the power -10. Okay, 8.55 into 10 to the power minus 10. ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया. और कैपेसिटेंस से Q कितना आएगा? Q is C into V, कैपेसिटेंस into V. So 8.85 into 4. ठीक है, 8.85 into 10 power minus 12 into 4. 4 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट. ठीक है, so this is the amount of charge. कितना चार्ज है? ये इसने 100 power minus 4 क्यों कर रखा है? एक मिनट. तुम्हारा पावर कितना है? 8.85 into 10 power minus. वरुण और तरुण ये -10. हाँ वो सही है. देखो ये इतना चीज है 10 power minus 10 है ना, ये -12 into 100 into 10 minus. ठीक है, तो so the net charge इतना आ रहा है. देखो 3.5 into 10 power minus 10. Everyone is getting this much or not? Are you getting this charge or not? Yes. Yes, sir. हाँ बोलो क्षितिज. Sir, So Q is equal to CV, right? So 8.85 into 10 to the power -10 into 4. -10 into 4.
Sir, according to calculator, it should be 35.4. Yeah, देखो that's अच्छा what I ये got. एक मिनट, ये 10 पर माइनस 10 ही होना चाहिए। देखो -12 यहाँ आया था, एरिया तुम्हारा था, एरिया कितना था? एरिया वाज 10 पर -4 ना? Yeah, पक्का So मैंने area was 10 to the power -2. -2 10 power -2, not 4. तो ऊपर -2 नीचे -4, ये खुद -12 है, तो मतलब आएगा -10। फाइनली जो Q हो -10 में आएगा, ये तो सही लिखा है। लेकिन 8.5 into 10 power 4 है ना? ओ 8.85 into 32 into 10 power -10 ऐसा आएगा। 35.4 into 10 power Yeah, -10 which is 3.54 into -9 आएगा फाइनली का चार्ज पे। हाँ चार्ज पे -9 आएगा ना, मतलब 3.54 Yeah, -9 yeah. आएगा, I think the total answer में it should be 8 to the power 8, not -9 9. नहीं 10 or 10. Yeah, -10 sorry, 10. नीचे Yeah. 10, हाँ तो 10 है आंसर, ये से गलत है। 2.21 फाइनल आंसर है, 2.21 into 10 Into 10 10 power. 10 ये फाइनल आंसर है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू फिर N कर देना है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू N कर दिया, तो वहां से N निकल आया। ओके, द टोटल चार्ज इज N into चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है, ठीक है? लिख लो इस क्वेश्चन को, जस्ट मेक अ डायग्राम एंड लेबल द थिंग्स। Sir, that was the last line that I had to copy from the question. The last line was determine the capacitance of the system, okay? And then they gave the value of epsilon naught, which 8.85 into 10 power -12, okay? I'll repeat. You have to find the capacitance of the system, and they gave you the value of epsilon naught, which was 8.85 into 10 power -12. May 11.
Note the homework from the exercise PDF. Note the homework from the exercise PDF which I have uploaded today. One, 2, 3 already I gave. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tak enough hai. I'll tell you what I have not given. Okay, I think that will be easier. 14th I have not given. 10th I have not given. 14th, 10th I have not given. Yeah, I think everything else is 14th and 10th. So I'll just write it. Question 1 to 23. I'll also discuss one of the questions now. I'll discuss question number 12. Okay. So 5 capacitors are connected and shown in the figure. Initially, S is open and all the capacitors are uncharged. When S is closed, steady state is open. Then find the potential difference between N and N. ठीक है? सुनो ध्यान से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. बोला है पहले स्विच ओपन है. स्विच ओपन है, पहले हर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है. हर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है. ठीक है. कितने कैपेसिटर्स हैं इसमें रिया इस सर्किट में? 5. Oh, I'm sorry, 4. 4, 5. 5, 4, 5 है 1, ना? 2, 3, 4, 5, 6. 5 कैपेसिटर्स 5 है ना? So what about? ये 7 और 31 तो बैटरीज हैं. Okay, right. Okay, yeah. 5. Sorry. जब इसको बंद कर देंगे तो ये पांचों कैपेसिटर सीरीज में होंगे. Yeah. अच्छा, नेट पोटेंशियल कितना होगा? 31 ऐसे, 7 ऐसे. तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? Will it be 38? नहीं, उल्टे हैं ना दोनों. These batteries are opposing each other. So I don't know the formula for that. अरे दो बैटरीज अगर सेम पोलैरिटी की हो तो ऐड हो जाती हैं सेम उसमें और डायरेक्शन में. Okay. These batteries are not helping each other, they are opposing each other. Do you see? Okay, so it'll be subtraction. Subtraction. So what is the effective battery? 24. 24, and the battery 24 will be like this. Okay, like this. Okay, 24 at distance. Okay. Okay. Fine. I mean, basically 24 battery tries to give potential in the anti-clockwise sense. Okay, in this circuit. Okay. 24 volt. Okay. What is the net capacitance of these 5 capacitors in series? So that would be like 1 by C1. Very good. 1, yes, 1 by 4 plus. Yeah. 1 1 by by 2 4. Yeah. plus 1 by 4 plus, my bad, 1.6 plus 1 by 1.2. 1 by 2 is 1 by 1.2. I think 5 by 6 because right, 1.2. Yes, 5 by 6. Okay. 5 by 6. 5 by 6 plus 1 by 6 कितना होता है? 1 by 6 by 6 it is 1. 1 और ये 1 by 4 और 1 by 4 half होता है ना? Yeah, and half Half plus so half it's is 1. 2 in total. So total 2. 1 by C equivalent is 2, right? 2. So Equivalent C is 1 by half. 2. So C equivalent is half. So the battery is 24. How much charge will be gone? How much charge will come out? How much charge will come out? Okay, so So it is Q is equal to C into V. yes. So that'll be 24 into 2. Into half. Into half, sorry, right. So So that's 12. 12 microcoulomb charge will come out, right? Yeah.
because this all these capacitors in series, each capacitor will have a charge of 12 microcoulomb. Okay. Yeah. Okay. Now ये इतना समझ में आ गया? यहाँ सब लोग लिख लो. Now they're asking find the potential difference between M and N. Between M and N, M और N. ठीक है, तो कैसे करना है? See the potential difference. I'll tell you the potential difference. I think I should tell you in the next class, because do you understand what is the potential difference across 2 microfarad now? Can you tell me this, just this much? Potential difference Across the 2 microfarad. The whole potential difference is 24. No, just the 2 microfarad. You know the charge on the 2 microfarad, which is how much? 12. 12 microcoulomb. Okay, yeah. What is the potential? And the capacitance of this is 2 microfarad. Okay, and yeah. Okay, it's fine. What is the potential difference? Q by C will be the Yes. potential difference. Yes. So that will be 6. 6, right? Yeah. और इसके across कितना होगा? 12 power for 3. इसके across कितना होगा? 10. 10. तो ये जो तीनों का सम होगा, जो n और n के across पूछा है ना, तो उसमें इन तीनों का सम, इसके across 6 था, इसके across 3 था, 9 plus 10 कितना? 19 ना? Yeah. और फिर ये एक और 31 वोल्ट है, वो 31 minus 19 होगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों होगा 31 minus 19. ठीक है, क्योंकि इनका जो चार्ज है ना वो ऐसा है, एक्चुअली वो चार्ज ऐसा है कि वो प्लस 24 ऐसा था ना, ऐसा था. So this will become positive, this will become negative, this will become positive, this will become negative. Okay, so this terminal of this capacitor is positive, this is negative. So I'll actually carefully explain what is happening. Okay, and then the answer is 31 minus 19. Okay, and that is I think 12. So we face like these kind of questions like throughout the questions you've given, where you explain it next I think तुम कर लेना, फिर भी ट्राई कर लेना, अगर नहीं आता है तो बता देना. ठीक है, मतलब कर लेना फिर भी ट्राई. ओके, हो सकता है सब में नहीं हो ऐसा. ओके, ठीक है. Okay, that's it.